Hi everyone, welcome to third chapter of KK Bhalchandran book. In this chapter, we are going to see about onboard handling and preservation. So this is the third chapter of KK Bhalchandran book. So यहाँ पे हम देखेंगे in this lecture we are going to see about specifically about the first paragraph KK Bhalchandran book, that is about onboard handling and preservation. It's third chapter. So in this chapter we are going to see about fish. फिश इज अ हाईली पेरिशेबल आइटम. सो हम जब फिश को कॉट करते हैं एक स्पेसिफिकली एरिया से, हम बोल सकते हैं एक फिश है. यहाँ पे मैं एक ड्रॉ करता हूँ. एक बोल सकते हैं ये वाटर बॉडीज है या सी है, ये सी है. यहाँ से हमने क्या किया, एक फिश को हमने क्या किया, कॉट किया. एक फ्रेश फिश है, हमने उसको क्या किया, कॉट किया. ये फिश है, इसको हमने क्या किया, कॉट किया. इस फिश को, इस फिश को कॉट करने के बाद इस फिश में कुछ बैक्टीरिया का जो परसेंटेज होता है वो होता ही होता है. क्यों तो ये बट रेंज कैसी होती है, स्मॉल होती है या लार्ज होती है. सो फ्रेश फिश of the flesh is sterile in condition, but when it dies it get contaminated. So यहाँ पे हम देखते हैं वन बाय वन. So fish is highly perishable item. Fish is highly perishable item. Changes taken from the way changes take place. Spoilage occurs. Spoilage occurs due to by bacteria. That is due to auto oxidation of the fat. यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है फैट का और स्पॉइलेज होता है फ्लेश का. सो फ्लेश ऑफ फिश इज स्टराइल. जब फ्लेश ऑफ द फिश स्टराइल होने के बावजूद भी क्या होते हैं, इवन दो बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन एंड द गिल्स एंड द सरफेस स्लिम. जो सरफेस स्लिम होता है उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइन में होते हैं, जैसे गिल्स में होते हैं. इस तरह से बैक्टीरिया तो प्रेजेंट होते ही है स्टराइल फिश में भी. द कॉन्टेमिनेशन डिपेंड ऑन द बैक्टीरिया क्वालिटी ऑफ द वाटर. जहां से हम फिश को कॉट कर रहे हैं या फिश को कैच कर रहे हैं, वहां पे जहां से कॉट कर रहे हैं उस वाटर पे डिपेंड होता है बैक्टीरिया का परसेंटेज या बैक्टीरिया का लोड. सो डाइजेस्टिव एंजाइम एक्टिव इवन आफ्टर डेथ कॉज डिस्कलरेशन और बेली बर्न्स. सो बैक्टीरिया का डाइजेशन एंजाइम एक्टिव होते हैं, जैसे कि डिस्कलरेशन होता है बेली बर्न्स का. आफ्टर सम बोल सकते हैं डिस्कलरेशन होता है और बेली बर्न्स बोलते हैं इसको. द क्वेश्चन में बी लाइक दिस, बेली बर्न्स caused due to bacteria, fungal, and like that, and so on, so on. So like that question will be in JRF point of view. So it causes a proteolytic changes. Lipid become oxidized by atmospheric oxygen and oxidative rancidity. So क्या होता है, प्रोटियोलाइटिक चेंज होते हैं कुछ और लिपिड बिकम ऑक्सीडाइज होता है बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होता है वो क्या करता है, लिपिड को ऑक्सीडाइज करता है या ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी होती है स्पेसिफिकेशन जब फिश डाई होती है. जब उसका फैट जो है या लिपिड जो है, फैट एंड लिपिड इट्स काइंड ऑफ फैटी फॉर्म ऑफ द लिपिड, और सो व्हेन इट गेट ऑक्सीडाइज्ड इट ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी होती है उसमें. सो इन केस यहाँ पे बोल सकते हैं जो फिश लाइव है उसको भी ऑक्सीजन कंज्यूम कर रही है वो फिश. So that fish is consuming the oxygen, and the dead fish is also in that way not consuming oxygen, being in contact with the oxygen. So in dead fish, when it get in contact with the oxygen, it get the part of their body is decomposing, and the part of the body is oxidative rancidity is taking place. In case of live fish, what is happening? In case of live fish, the what we say that oxygen is using as for catabolism purpose or for day-to-day life purpose, like respiration and all activities for burning the foods. So but in case of the dead fish, what is happening, the lab lipid which are present, which is residues or that lipid is present, it get rancidified due to atmospheric oxygen. That kind of reaction are different. The catabolism is different and rancidification is different, but both are the somewhat same, you can say. So need for hygiene and handling. Need for hygiene and handling. What is there in need to for handling and need for hygiene? So spoiled fish can be considered as a fish that has become less susceptible to consumer. So fish not consumed by the spoiled fish. If someone told you that this fish is spoiled, why you gonna consume that fish? You're not gonna purchase such kind of fishes. So in such condition, what happen? The result of various physical and chemical and other post-mortem changes take place in them, and fish is distributed fresh or processed into different product and marketed. So quality end of product is dependent. Like someone sold a spoiled fish
to the seller, and the seller that processing that kind of fish for that vendor, seller, or you can say marketer, that is vendoring, like that fishes are processing the fishes, that raw fishes are the spoiled, and they are processing that raw fishes in the kind of product for canning purpose or like that, but the product quality will be depend on the raw material at the end. सो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ। एक रॉ मटेरियल है एक फिश का, ये फिश रॉ मटेरियल एक है फिश का। इस फिश को कुछ उतनी अच्छी खासी फिश नहीं है, बोल सकते हैं स्पॉइल्ड है, स्पॉइल्ड बैक्टीरिया की वजह से फिश थोड़ी बहुत स्पॉइल्ड है, उतनी ज्यादा स्पॉइल्ड नहीं है। बट मैंने इस फिश को क्या किया, प्रोसेसिंग के टर्मिनोलॉजी में डाल दिया, जैसे कैनिंग, प्रोसेसिंग, हैंडलिंग एंड फ्रीजिंग लाइक दैट। यहाँ पे क्या हो रहा है, हैंडलिंग में हो गई फिश, ये प्रोसेस अलग अलग प्रोसेस से हैंडलिंग होकर ये क्या हो गई, क्वालिटी ऑफ द एंड प्रोडक्ट किस पे डिपेंड होगा, रॉ मटेरियल पे। तो रॉ मटेरियल ही सही नहीं है तो एट द एंड प्रोडक्ट क्वालिटी क्या होगी, डिफेक्टेड होगी। सो यहाँ पे इतना ही बताया है कि द क्वालिटी विल बी डिपेंड ऑन द रॉ मटेरियल ऑफ द फूड। So next we are going to see about handling of fish on board. So on board, how to handle the fish, how the main factor which are affecting the quality of fish on board। तो कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो ऑन बोर्ड हैंडलिंग पे अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है यहाँ पे क्लीनलीनेस ऑफ द डेक एंड फिश होल्ड्स। जो फिश कैच कर रहे हैं, जो डेक है फिश कैच करने के बाद जो रखा जाता है शिप के ऊपर, या डेक बोलते हैं इसको, डेक पे कैसे कैसा माहौल है, या व्हाट काइंड ऑफ द एरिया इज ऑन डेक, how the deck is contaminated fully with the bacteria, it is also depend on the fish get spoiled। अगर डेक पे ही fully बैक्टीरिया ज्यादा है तो fish also भी get spoiled due to such bacteria। क्वालिटी एंड क्वालिटी वाटर यूज। अब मैं वाटर क्या कर रहा हूँ, इस फिश को मैं अच्छा वाटर यूज नहीं कर रहा, फॉर क्लीनिंग पर्पस आई एम यूजिंग द स्पॉइल्ड वाटर। इन सच कंडीशन व्हाट विल हैपन, क्वालिटी एंड क्वांटिटी वाटर यूज, क्वालिटी कैसा और कितना क्वांटिटी का वाटर मैं यूज कर रहा हूँ फॉर दैट वॉशिंग, फॉर वॉशिंग पर्पस ऑफ दैट फिश। सो इट डिपेंड ऑन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर आर यूज्ड। टेम्परेचर एट विच फिश इज मेंटेन्ड, इस फिश को मैंने क्या किया, रूम टेम्परेचर पे रखा, तो व्हाट विल हैपन, it will get chance for bacteria to multiply। if the bacteria get chance to multiply, bacteria get chance to multiply and they just divide into one and divide into multiple copies like this। so यहाँ पे क्या होगा, रूम टेम्परेचर बोल सकते हैं 30-35 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सो रूम टेम्परेचर इन सच कंडीशन, बैक्टीरिया एक ऑप्टिमम कंडीशन होती है मल्टीप्लिकेशन पे, तो टेम्परेचर शुड बी लो। सो इन सच कंडीशन मुझे क्या करना चाहिए, इस फिश को मुझे फ्रीजर में ले जाकर रखना चाहिए, और फ्रीजर में रखने के बाद ये फिश क्या होगी, अच्छे से रहेगी। So freezer should be used in such condition। The general handling and practices adopted, general handling practices adopted किए जाते हैं, general handling practices adopt किए जाते हैं। तो सिनेरियो है वो यूज करना चाहिए। Cleanliness of the equipment and utensils used in handling and packaging and storage। जैसे बोल सकते हैं यहाँ पे डेक पे मैंने एक फिश है, मैंने कॉट करने के बाद डेक पे फिश रखा, आफ्टर कैचिंग द फिश जस्ट अ फिश आर केप्ट एट अ डेक, on after that sometimes the fish are just picked up with the hand without using hand gloves or without using any kind of utensils or like that, that is not a proper way to catch or lift that kind of fishes. In such condition what we have to do, we are just wear the hand gloves, and the hand gloves or that utensils which are we are using for the fish caught, fish for fish transportation purpose, in such condition it should be clean, it should be packaged and handling should be क्लीनलीनेस। तो बोल सकते हैं हमने फिश को कॉट किया, इस फिश को हमें अच्छे से पैक करना चाहिए। इसका जो यूटेंसिल्स हम यूज कर रहे हैं या रैपर पैकिंग के लिए यूज कर रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए, इट शुड बी गुड क्वालिटी का होना चाहिए वो। जैसे अब मैंने इस फिश को पैक किया इस कंटेनर में, तो ये जो कंटेनर मैं यूज कर रहा हूँ या पैकेट ऊपर वाला, तो इट शुड बी इन गुड क्वालिटी, इट शुड बी कॉन्टेमिनेटेड फ्री। सो पर्सनल हाइजीन ऑफ द फिश हैंडलर, तो बोल सकते हैं mostly fish and handlers are like personal hygiene of fish handlers depend on the fish handlers, like mostly fish handlers का क्या होता है, ज्यादा ये नहीं रखते हो पर्सनल हाइजीन। सो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं या लार्ज कंपनीज होते हैं, लाइक मोस्ट ऑफ द मोस्ट लाइक द कंपनीज व्हिच आर बिग बिलियन डॉलर्स कंपनीज। सो इन व्हाट हैपेंस, in such companies they just maintain the staffs with the well clean,
But in India, you can take example of other states. They don't use such kind of cleanliness and hygienes. So we have to use, we have to maintain personal hygiene and cleanliness. So that is only given in this handling of the fish on board. So next we will see about washing. So in washing, what happen? Just take a bucket and pour the water. Not like that. It's not gonna happen like that. So first of all, what we have to do, catch should be washed. एक बार हमने फिश को कैच कर लिया तो उसको हमें वॉश करना चाहिए उस फिश को अच्छे से। और वॉश करने के बाद क्या करना चाहिए उस फिश को हमें, एक एग्जांपल मैंने फिश को कॉट किया इस फिश को। अब इस फिश को क्या करना चाहिए, अच्छे से वॉश करना चाहिए। और वॉश किस कैसे करना चाहिए, वाटर क्लोरिनेटेड होना चाहिए टू 10 ppm। 10 ppm तक ये जो वाटर यूज कर रहे हैं हम वो क्लोरिनेटेड होना चाहिए, 10 ppm पार्ट पर मिलियन तक। सो क्वेश्चन विल बी लाइक दिस इन JRF पॉइंट ऑफ व्यू। तो water which we are using for washing purpose, what should be the ppm of that chlorinated water? The option will be like 10, 20, 30, 40 likewise. So we have to mark 10 ppm. It's looking, the question is just simple. You can click it. Yeah, you can mark it in exam. So next we are going to see about sorting. सॉर्टिंग मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉर्टिंग मीन्स एक देख यहाँ पे कलर कलर है, कलर के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, ब्लू वाले अलग, ग्रीन वाले अलग, येलो वाले अलग, लाइक दैट वी आर जस्ट सॉर्टिंग थिंग्स इन डिफरेंट मैनर। एंड इन शेप व्हाट वी आर डूइंग, राउंडेड शेप is different, triangle shape is different, and then oval shape is different. Likewise we are separating the things in the other manner. And in case of size, what we are doing here, according to size, large one, small one, and medium size one. So like that. In case of fisheries, we are doing the same method, nothing else. You can see these are fisher humans. They are just sorted. This already sorted this. See, they properly sorted the fishes. See this large one fishes. See, these are the large one. These are the large one fishes. These are the small ones. These are the rounded ones. The specific according to species where they are just sorted these fishes. According to like these are the you can see prawns are according to prawns are sorted. Then Bombay doctor also sorted along with their size. Yeah, they just sorted the things in well mannered. So I want to say that here only the sorting is the maintained in the fisheries. It should be clean on. So pelagic shoal consists of single species. The pelagic shoal, the fishes which are the pelagic shoal, the group of the fishes, which are the single species mostly. Trawl will comprise of several species and varying sizes and very small or very long, big one. So जब हम trawling करते हैं fishes की, so in such condition, the under the net, trawl net, the fishes get caught according to their size, according to not specific size. They caught according to size, very small and very big ones. All they got together. So in such condition, we have to sort their according to their size wise. Fish which are considered to be unfit for preservation. The fish which are considered to be unfit for preservation or for human consumption by way being braised and diseased and thrown back to the sea. The fish which are considered unfit for preservation. हम बोल सकते हैं कि fish ये dirty है या spoiled fish है, are not consuming well for the human purposes. In such condition, what we do, they just throw that fishes into the back into the sea. So high value fish are generally carefully sorted and suitably preserved. High value fish are generally carefully sorted and suitably preserved. The you can say the tuna, mackerel, and this kind of fishes are high values fishes. Generally, they are carefully sorted. They according to they sorted and they preserved very well. So that's it is given here. So next, evacuation and removal of the gills. So in evacuation and removal of the gills, what happened? Spoilage of bacteria in large number. Um, Spoilage of bacteria in large number occurs. Potential areas where bacteria multiply. हम बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया सबसे ज्यादा कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो गिल्स एंड विसेरास में प्रेजेंट होते हैं. इन प्रीवियस लेक्चर, in previous chapter, you had seen about all the bacteria and their function and all the where they present and how much quantity they are present, like that. If you are want to learn this chapter, just go in our playlist and just find there. So potential areas where bacteria multiply, partially digest food in the viscera may become sour or putrid due to bacterial action.
जो बैक्टीरिया का एक्शन होता है, तो बैक्टीरिया कॉज करते हैं कि विसेरास बिकम सोर और प्यूट्रीड ड्यू टू बैक्टीरियल एक्शन। जो विसेरल ऑर्गन है वो सोर्स हो सकते हैं बैक्टीरियल एक्शन की वजह से। विसेरा आल्सो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। Viscera contain digestive gland like the digestive gland, intestine and likewise जो भी पार्ट होता है visceral organs में, so they are just kind of full with the digestive enzyme. In such condition they digest their own body after the death of the fish, so it causes belly burn or discoloration causes in such condition. Evacuation should be completed, no portion left out. Evacuation should be completed from one to one end. The no part will be left out. The guarantee will be taken. Head retain intact. In You can say some people remove their head, but head retain intact in the evacuation procedure. Retention of the visceral part can easily contaminate the soft belly. If you are keeping, why we should doing this evacuation and removal of the gills? You may raise this question, but retention visceral part can easily contaminate the fish belly. So in such condition, we are just performing the removing the visceral organs. So this is all about this is all about evacuation and removal of the gills. And upcoming, like you will see the this see evacuation and removal of the gills. We are removing the gills with the help of the yeah, help of the knife. We are removing these gills because the load of the bacteria present at this level is maximum. And then evacuation and removal of the gills. In this you can see just removing visceras. In this visceras just cut this part. You can see this part we are cutting here. See this part we are cutting here. See this part. And then after cutting this part, we are removing internal alimentary canal and including digestive gland and all the things. Then you can see by a spoon we can remove, or with the hands. Mostly people are removing with the hands. We can with the spoon or with the hands we can remove all the visceral organs. So this is the evisceration and removal of the gills. So bleeding. In bleeding you can see. In bleeding you can see. So step before preservation of the fish. This is the step before preserving the fish. Before preserving the fish, this step is performed. Fish is not thoroughly bled. Blood can clot and turn dark brown, affecting the color and appearance of the meat. Sometimes what happen? Fish is not thoroughly bled. Means after thoroughly, if it is bled, then it affect the color and appearance of the meat. Turn dark brown. It converted into dark. Some fishes are just their texture of that meat are the somewhat red. If you are removing all the blood from that from the fish, thoroughly bled from from it, or clotting occurs with the contamination with the oxygen or like that. The clotting occurs in such condition that meat color become disappeared or it not become attractive. In such condition appear affecting the color and appearance of the meat. That's it only. Not possible to bleed and evacuation all fishes, particularly the small ones. In case of small fishes, in case of small fish, I caught, like you can say, I'm going to caught for 100 of the fishes. I caught 100 of the fishes. In such condition, what happened? I can't do the bleeding in specifically in small fishes. 1000 फिशेस यू कैन टेक. मैंने 1000 फिश कॉट किया, तो मैं सब में ब्लीडिंग प्रोसीजर कर सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ, बट it's too lengthy process. In such condition, the small fish are particularly not possible to bleed in evacuation all fish, particularly in the small ones. Small ones में blood भी कम होता है, quantity of the blood is very low in small fishes, or quantity comparatively low as compared to large ones. So in such condition, not possible to bleed on evacuation of all fishes, particularly in the small ones. Generally the bleeding is performed in the large fishes like tuna and seal fishes, like tuna fish. Tuna fish is very famous for bleeding purpose. Without bleeding, mostly people doesn't consume such fishes. This is a tuna example taking. The bleeding is done by cutting this throat area. By cutting this throat area, just we are cutting done by cutting or sitting. Slitting means small cut. The automatic their arteries are cut from this part, and then all blood is removed, and then this tail portion is also cut here only, and then all blood is removed. So immersion in cold water usually for 30 minutes. After cutting this, just keep this fish in immersion for 30 minutes in the cold water. See in how they perform it. Let's see.
just they do this. So cut this fish here only, cut this fish at this throat portion, um, below the gills portion. Just cut this fish from this part, and then keep this fish in the water for 30 minutes in cold water. It should be in cold condition water for 30 minutes, and bleeding is performed likewise. So I have to tell you here only, we had started our Telegram channel. If you are interested to join this channel, Telegram channel, just scan this QR code via your mobile and be connected, get connected with us. So thank you for watching this video. Be connected with the Fishco. That's it.